एक चांस और दे रहा हूँ मैं। अब बोलो, तुमने 12 करोड़ बोला था, अब तुम 20 करोड़ भी बोल सकते हो। At this point of time in my mind, Jadeja and Akshar in T20s are almost equivalent, if not more. That's the reason ये वाला जो रूल है ये थलासंस को बहुत खुश करने वाला है, क्योंकि they'll get थाला back for what क्या है? बोला है कि अब रोहित भाई ने बोला कि पेस पे काम करना है, और पेस बढ़ा कि फिर जो आया है, जो कमबैक हुआ है, तो मेरे ख्याल से JFM के ऊपर स्टब्स को मैं RTM करना प्रेफर करूंगा, एंड देन माय सेकंड RTM ऑप्शन वुड बी JFM. Hello and welcome back everybody to Two Silly Points. Thank you for showing love to our first video. We hope you enjoyed it. Here we are back again with another episode, and in this episode we are going to talk about the biggest festival of India called the Indian Premier League. It's back. It's that time of the year. Mid दो सीजन के बीच में जो मेगा ऑक्शन होता है, it's time for that. It's time for all the cricket nerds, cricket experts out there. हर घर में एक बैठा हुआ है इंडिया में. सब अपना अपना दिमाग लगाएंगे, इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए. We're also gonna sit here. We're also gonna give you our 2 cents of what we think the approach should be, or rather what approach the teams would take. So it's gonna be fun. The biggest IPL is back. Season is back. Let's go. All right. So let's get started with our first segment in the episode. New retention rules for this year's auction. Let's get started. फटाफट थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या अभी बीसीसीआई ने क्या क्या बोला है. पहली बात तो अपना एवरी आईपीएल टीम नाउ हैज अ पर्स ऑफ 120 सीआर. भाई 120 सीआर मतलब अनप्रेसिडेंटेड. भाई गजब इन्फ्लेशन लग रहा है. 120 पहले लास्ट आई थिंक मेगा ऑक्शन में 100 था. 20% ओवर द स्पैन ऑफ 3 years. बढ़िया भाई. एनीवन नोज व्हाट द पर्स वाज, ऑक्शन पर्स वाज इन द फर्स्ट सीजन? इफ यू डू नो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेस दैट राइट. ठीक है, पहले रूल की बात करते हैं. जो अपने मैक्सिमम रिटेंशंस है, जो सो एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर रिटेंशंस एंड आरटीएम्स यू कैन गेट योर 6 players बैक. करेक्ट. आउट ऑफ दैट 6, मैक्सिमम 5 ऑफ योर प्लेयर्स कैन बी कैप्ड. ठीक है, तो अगर तुम 6 के 6 यूज करोगे तो तुमको छठा प्लेयर अनकैप लेना ही पड़ेगा. और मैक्सिमम 2 players कैन बी अनकैप्ड. करेक्ट. इसमें इंटरनेशनल, नॉन इंडियन ऐसा कोई वो नहीं है डिवीजन. मैक्सिमम 5 कैप कर सकते हो, 2 अनकैप कर सकते हो. And this includes RTM as well, right? Yeah, 6. Any combination of RTMs and retentions. Yes. दूसरा है कि RTM वाला ट्विस्ट. RTM वाला. So there's a twist in RTM this time. पहले आपका होता था कि if you have a player, you've released the player has gone to the auction. तो ऑक्शन टेबल में फॉर एग्जांपल मेरे पास पवन नेगी करके एक प्लेयर हुआ करता था. ऑक्शन टेबल पे गया, मान लो डीसी ने बोला कि मेरे को चाहिए पवन नेगी 16 करोड़ में. आरसीबी कैन रेज द पैडल एंड से नो, आई वांट टू एक्सरसाइज माय राइट टू मैच, एंड आरसीबी वुड गेट द प्लेयर बैक. Yes. बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट wherein the auctioneer will go back to the previous team which जिसने सबसे ज्यादा बिड किया था, एंड विल आस्क कि भाई तुमको एक चांस और दे रहा हूं मैं. अब बोलो, तुमने 12 करोड़ बोला था, अब तुम 20 करोड़ भी बोल सकते हो. राइट. तो वो एक चांस और मिलेगा टीम्स को टू इंक्रीज देयर मैक्सिमम बिड फॉर द प्लेयर. अब वो एक बिड, उस जो बिड चल रही थी, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ की बिड चल रही है, तो क्या वही बिड होगी 1 करोड़ और होगी? वही मैंने बोला ना, 12 करोड़ पे क्लोज हुआ था अगर पिछला बिड. ठीक है. तो सामने वाले टीम कैन से भाई 20 करोड़ भी दे सकता हूं अब मैं अगला बिड मेरा 20 करोड़ का. नाउ द ऑक्शनियर विल गो बैक टू द फर्स्ट टेबल एंड से कि भाई करना है तो मैच करो, वरना द प्लेयर इज गॉन. ठीक है. सो दैट्स द ट्विस्ट इन द टेल. बढ़िया है भाई ये वाला. It will bring a lot more strategy into the place for absolutely. मतलब you can't create a strategy around the player कि भाई मैं अभी रिलीज कर देता हूँ, आरटीएम में ले लूंगा. पता चल रहा है कि वो तुम्हारा बजट 10 करोड़ का था, वो 20 करोड़ का हुआ प्लेयर, because there are 2 chances given in the RTM. So that's a great twist. मजा आएगा भाई ऑक्शंस. Okay, another very interesting rule. I think ये रूल सारे थाला फैंस को बहुत खुश करने वाला है. भाई थाला सन्स बोलो, थाला फैंस बोलेंगे, थाला सन्स. कोई नहीं, खेलने दो एक और सीजन भाई. एक और multiple more seasons. So this is the capped to uncapped uncapped piece, जिसमें a player who has not played for the last 5 years in an international game is going to become uncapped, and that's the reason ये वाला जो रूल है ये थलासंस को बहुत खुश करने वाला है, क्योंकि they'll get थाला back for what 4 CR. भाई
क्या ही बोले अब इस रूल के लिए, बाकी प्लेयर्स भी हैं, काला के लिए नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, काफी है। बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जो बाकी प्लेयर्स टीम्स भी को हैं, काफी फायदा होने वाला है। वुड यू लाइक टू पीयूष नेम? चावला, तुम तो एमआई वाले पीयूष चावला को शायद कर लो पीयूष रिटेल। चावला वी विल नहीं, कम टू दैट कि एमआई के पीयूष कौन से चावला रिटेल है, प्लेयर्स। मोहित शर्मा है, होंगे यार, बाकी भी होंगे, नाम याद रहा है कोई? सोच सोच बता। भाई कपिल देव गावस्कर को खिला दो, मैं अरे कहता हूँ ले आओ कपिल पाजी को, आईपीएल इज बैक, कपिल पाजी बोलेंगे मैं कभी टी20 खेल नहीं पाया, आईपीएल खेलने का मौका आ चुका है। इवन इवन अमित मिश्रा क्या? मिशी बॉय, यस, मिश्रा इज एलिजिबल, 5 years, यस। lot of players, lot of good players. The auction is going to be crazy भाई this time. भाई मजा तो आएगा भाई, मजा ही आ छुट्टी जाएगा। लेनी पड़ेगी नौकरी पे भाई, बैठ के लाइव करेंगे भाई अपने ऑडियंस के लिए। That's a good idea. चलो मूविंग ऑन, अपना है ओवरसीज प्लेयर कैपिंग। अभी इसमें कैसा है, नाउ दिस इज अ रूल वेयर बीसीसीआई इज टेलिंग ऑल द ओवरसीज प्लेयर्स कि तुम जो मिनी ऑक्शन में आके जो सप्लाई डिमांड का फायदा उठा के तुम बड़े बड़े हेफ्टी पैकेजेस लेके जा रहे थे, 20 करोड़ 25 करोड़, सॉरी अब ये नहीं होगा। Indian Premier League is truly Indian, bro. ट्रूली इंडियन, एंड हमारे जो हाईएस्ट प्लेयर है दैट इज योर अपर कैप, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, अगर हमारा एक टीम ने फॉर एग्जांपल अपना किसका, चलो आरसीबी की बात कर लेते हैं, अगर रजत पाटीदार को उन्होंने 16 करोड़ में वेट करके लिया, ठीक है, तो कोई भी ओवरसीज प्लेयर उससे ज्यादा नहीं कमा सकता। तुम बीड भले तुम 25 की कर लो, पर वो जो 9 करोड़ का गैप है ना, वो प्लेयर को नहीं मिलेगा, वो जाएगा बीसीसीआई के पास प्लेयर्स की वेलफेयर के लिए अपेरेंटली। सो ये एक चीज है कि जो अभी बीच सीजन में तुम आके बना के जा रहे थे, वो तुम बना नहीं सकते हो। But what are your views on this? Is this a good move? Is this a think bad move? I think it's a brilliant move, क्योंकि अगर आप स्टैट्स देखो ना, सो 4 ऑफ द लास्ट 5 सीजन्स और लेट्स से 7 आउट ऑफ द लास्ट 10 सीजन्स में ऐसा हुआ है कि द टॉप अर्निंग प्लेयर हैज बीन ओवरसीज प्लेयर। मतलब यार That's a ओवरसीज crazy प्लेयर, stat. 4 out of 5 and 7 out of 10. यस यस ब्रो, 7 आउट ऑफ 10। एंड मतलब Crazy. ऐसा तो नहीं है कि वो लोग उतनी ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं कि भाई दे डिजर्व सो मच द हाईएस्ट अर्निंग। भाई हमारे भी कोहली साहब हैं, हमारे भी रोहित भाई हैं, खेल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उनको ही सारा पैसा जा रहा है। आई थिंक ब्रिलियंट मूव फॉर बीसीसीआई। पावर है तो भाई एक्सरसाइज करो ना, एंड फेयरली एक्सरसाइज करो इन योर ओन एडवांटेज। मतलब अगर तुम वो नहीं कर रहे हो, देन व्हाट्स द यूज ऑफ having that power with you? I think BCCI is heading in the right direction. Yeah. Good moves from a player's perspective. तो वो एक है। और अगर तुम मेगा ऑप्शन के पहले तुम रजिस्टर नहीं किया, तो तुम बीच में मिनी ऑप्शन में आके नहीं खेल सकते। मतलब तुम 2 साल पूरी सीजन, ये पूरा जो 3 ओवर का 3 साल का साइकिल है, यू आर आउट ऑफ दैट। If you don't register for the mega auction, interesting, you are out of the scenario. Interesting. So maybe you can even see likes of Joe Root registering for this, and Maybe the players who have not been registering maybe so long. Maybe yes. क्योंकि उनको पता है हर साल होना है, अगले साल कर सकते हैं. But Correct. now I think the pool of the players in the auction is going to be massive. Yes. Going to see some really great talent from overseas also coming in, right? और ये ओवरसीज फास्ट बॉलर्स ने इस रूल का, जो ये रूल नहीं था ना, उसका Correct, बहुत correct, फायदा लिया। correct. जोफ्रा I remember आर्चर की बात जोफ्रा करो आर्चर भाई। स्टार्क की बात कर लो आप। मतलब एमआई का 8-8 करोड़ का पर्स ब्लॉक्ड था। मतलब ऑल द I टीम्स आर remember that प्लेइंग season, विद man. 100 बुमराह, बुमराह, आर्चर, कोई नहीं है। बोल्ट, मतलब वो सीजन बहुत क्रेजी हो जाता अगर आर्चर खेल लिया होता तो। उसके बावजूद एमआई क्वालिफाइड फॉर द सेमीज। रोहित शर्मा टुक देम टू द सेमीज। बट एनीवे, लेट्स मूविंग ऑन। और अगर तुमने रजिस्टर किया ओवरसीज प्लेयर्स ने और खेला नहीं आके, फिर बीच में कर लिया, तो तुम वैसे ही 2 साल के लिए बैन हो। Oh, so if you get picked, and you have don't been come, sold, you don't come citing any banned reason. for 2 years. So banned for 2 years. Yes. That's interesting. BCCI is properly exercising the power and No, because this has happened multiple times. Yeah, man. अरे Players बहुत pulling बार। off for no good reason whatsoever. I think this is a good move. Absolutely. To get really good player to play. स्टार्क की बात कर लो, कितनी बार आ रहा हूँ, अरे मैं तो नहीं आ रहा हूँ। ज़ेम्पा बीच में पुल आउट कर लेता है। काफी बार हुआ है. This has happened multiple times. Yeah. Right, so good. Really good. great move for cricket, for entertainment. Correct. Let's see. This is very impact player का भी rule will stay for this whole cycle, is what BCCI has told us. Again, I'm not a big fan of the impact player rule. I think it takes away the whole strategic point of view. Balance चला जाता है. All-rounders are But that's a debate for a different time, man. Again, yes. Let's move on to the last rule. So last interesting rule which BCCI has introduced this year is the concept of match fees. So if you are getting sold for whatever amount, you are still going to earn an amount of 7.5 lakhs per match in terms of match fees, which is, as I said, going to be over and above your
CTC per se. CTC per se. Yeah. So HR terminologies. yeah. Along with that, this has some implications as well, right? The players like, say for example, Cameron Green, Virat Kohli, who have been earning in north of 17 CR. Previously, if they get banned for any reason, for any match, say for example, for slow over rate or for whatever reason, the match fees was calculated as their price or their CTC divided by number of matches they had played. So for a Cameron Green who was sold at say for example 17 CR playing 10 matches, अगर वो किसी एक मैच में बैन होता है तो उसका मैच फी उस मैच के लिए would be 17 CR divided by 10, which is 1.7 CR, but this time it's going to be 7.5. Just a quick FYI समझ here. गया ना. Good for the players. और अब तो 11 की जगह 12 खेलेंगे. A major implication is also for some of the uncapped players who are going to come into the system, right? Absolutely. 30 lakh का उनका अगर base amount है, they would still be, if they go on to play all 10-14 matches, they're still going to earn a hefty amount. So really good implication for an uncapped player. रिंकू सिंह जो अभी तक 30 लाख की सैलरी लाखों में कमा रहा था, deserve much more. यार हमारे टाइम पे हम जब छोटे थे ना तो घर वाले कहते थे कि यार क्रिकेट में कहाँ करियर बनता है, इतना बड़ा देश है, 150 करोड़ 140 करोड़, उसमें से 15 लोगों का स्क्वाड होता है, उसमें से 11 खेलते हैं, तुम्हारा नंबर नहीं लगा तो क्या होगा, क्रिकेट में करियर नहीं है. भाई अब है, अब क्रिकेट में करियर है. तुम आईपीएल के थ्रू बना लो, रणजी ट्रॉफी की सैलरीज देख लो डोमेस्टिक की. देयर इज मनी इन क्रिकेट and we are ruling the game. Absolutely. We are ruling the sport, and it's a very good time to be a Indian cricket fan. Absolutely. I think that's about it. We can move on to our next segment. Much awaited one, and we are so excited for this segment, which is our top picks, our calls for the IPL retentions. टोपी लगा लो क्या भाई? भाई टोपी नहीं भाई, unbiased views. So we are going to call out our retention picks for all the 10 teams now. Yes. Are you ready for it? Absolutely. Let's go. Very interesting. All right, let's start with RCB. Wow. RCB. All right. I think first pick for RCB, no brainer. He picks himself. We don't pick him. He picks himself. The brand of RCB, which is King Kohli. King Kohli. Here, not at all a bad deal. Absolutely bad deal. I mean, goes without saying. Which is being humble. So Virat Kohli hands down the first pick. What a player! What crazy seasons he has had with RCB right from the day one. He's been associated with the team. So no brainer. First player is going to be Virat Kohli. Absolutely. Locked it. Who's your second pick? My second pick is an Aussie who was traded in from MI at a very hefty price. I think Cameron Green at 14 CR. He packs a good punch because I think he comes in handy with his bowling. I think this is assuming that they are letting go of Maxwell once and for all, right? I think they should. It's for all. It's good. They should. Cameron Green is the one who looks like a probable future for an all-rounder in that way. क्योंकि height से आता है ball. He's got good variations. He's a good player at anywhere in the order. तो आप इसको one down भेज दो, proper hitting करके आएगा, middle order में खिला दो. In fact, I would be very selfish here and say that he's a great probable player at number 3 for RCB. 100% भाई, 100%. Given the impact player rule की batting deep जा रही है, send your hitter in as a floater in one down. MI यही करती थी. The way they used Cameron Green was so good. But the big question mark here is, will Cameron Green agree to play at 14 CR given that last 2 seasons he's been earning in north of 17? But I think he should. I think he will because he realizes कि mega auction और mini auction के dynamics काफी अलग होते हैं. Again, MI bought him in a mini auction and then traded him. तो वो price wouldn't be fair to compare this point of time. So given the loyalty, the fame that comes with RCB, I think that's what I'm saying. He'll have fun batting at Chinnaswamy, छोटे ground. Cameron Green की तो आधी bat से छक्का जाएगा उधर. Why not? मतलब everyone enjoys playing at RCB. I think मेरे लिए एक special mention यहाँ पे Will Jacks भी होता honestly. But given उसके पास इतना experience अभी नहीं है and he's a spin bowling all rounder, I think Green is a clear pick. Yeah, Green lock कर दो Green को second पे. Done. Third pick बताओ भाई. Okay, so my disclaimer here, I'm not honestly a very big fan of this player in white ball cricket. I know who you're talking about. But I know RCB management quite well. वो चश्मे जाके जो वहाँ पे बैठता है auction table पे और anyways, I think it's the fast bowler. Mr. Siraj is going to be my third pick at 11 CR. Yep. It's going to be RCB's third pick, not yours.
Of course, of course, of course. You wouldn't. RCB will. I would, अगर मेरे को पिक करना होता तो मैं honestly विल जैक्स को पिक करता इसके ऊपर, या मे बी या रजत पाटीदार. Absolutely. Rajat Patidar, if I were on the auction table, I would have retained Rajat Patidar, but I know RCB, and given that they have invested in Siraj along so many Over years, yeah. I think that's the pick that's going to be there. थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट एट सम स्टेज आल्सो हेल्प्स. आई थिंक अगर तुम थोड़ी कोर रिटेन करो ना, थोड़ा हेल्प करता है. एंड अगेन सिराज इज नॉट द बेस्ट वाइड बॉल बॉलर, बट मे बी if the conditions help him out a bit, if the ball is new, if you get 3 overs out in the power play from him, I think ठीक है. Okay pick. Let's go for it. Pick. We'll lock our third with Siraj. So Siraj we have logged our top 3 picks, top 3 capped picks, and I think we would stop with capped picks there. बस चौथे प्लेयर को पिक रिटेन करना मतलब यू स्पेंडिंग another 18 CR, correct. 18, 14, 11, again 18 and 14. Yeah. So I don't think many teams would go for the fourth retention because it takes a lot out of your purse. And you can get much better players in the auction table on the auction day, right? Correct. So I think those are our top 3 picks. There's going to be another retention, that's for sure. That's I think it's a no-brainer again, लास्ट ऑक्शन ट्रस्ट करके पिक किया. गॉड्स प्लान इस पर्सन के लिए नहीं था एक पर्टिकुलर सीजन में, किसी और के लिए गॉड्स प्लान था, बट पिछला सीजन वाज अ ड्रीम रन फॉर दिस गाय, एंड दिस गाय इज यश दयाल. या एब्सोल्युटली. वो कहते हैं ना, नो मार्केटिंग इज बैड मार्केटिंग. एब्सोल्युटली. तो यश दयाल के लिए ऐसा सीन हुआ कि इवन दो ही गॉट हिट, बट देन अगेन ही वाज इन द पिक्चर. अच्छा किसको मार पड़ा? यश दयाल को. बट द वे ही केम बैक इन द लास्ट सीजन, वो लास्ट ओवर क्रूशियल, वो क्या मैच थी भाई. सो left arm option at the top of the order, can bowl good slower ones at the depth, पीछे वाले slow balls. I think very good option at 4 CR. I would definitely go for it. I think अगर ये auction में जाता है तो he is going to be picked for definitely more than 4. That's my hope. Yeah, I think he would. Yeah, Indian pace bowlers left arm seamers quality. I think the supply is a little less, but he would stay back for RCB at 4. I think he will because he loves Kohli and he's said it out in the open कि भाई कोहली भाई से बात हुई, तो उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, थोड़ा खुल के डालने लगा. आई थिंक he'll stay. So these are our 4 retentions. Yes. What are your RTM picks for this team? Yeah, RTM picks are tricky, but I think my first one will be I'll spend on Will Jacks. Absolutely. Will Jacks. I would have loved to retain this guy, but not worth 18, 14 or 11 CR. But maybe you get him in the auction. Always. There's a good chance we'll get him at the auction at lesser price. Again, भाई क्या hitting at top of the order, came in late. मतलब इंग्लैंड का proper opener है. Last IPL also he came to the party little late, but क्या hitting मतलब. And राशिद खान को तुम अगर खेल रहे हो अहमदाबाद की पिच पे, good. और right arm off spin option can come in, always handy against. That's a like replacement for Maxwell maybe, and that's why you would go after him in the RTM. I have a very strong feeling that this guy might also get retained in place of one of the picks that we did. Maybe. But again, I think a safe choice for RTM, and I would like to have this person back in the RCB camp. Definitely. Computer जी lock कर दिया जाए. That's our first RTM pick. Last RTM pick, I think has to be Rajat Patidar, man. Patidar, yes. Indian core, Indian talent. Absolutely. And plays spin so well. RCB again has invested in this guy for so long. Yes. I think RCB really brought him into the scene. Has to be an RTM pick, man. Has to be. It is unfair that we did not retain him in our picks. Couldn't. Very good. Yeah, couldn't is the right word. But deserves the place in the side. Deserves to play for RCB, and I'd be really hurt if Rajat Patidar leaves the camp, man. Yeah. What a crazy talent. Absolutely. So these are our 6 picks. There's one more player that they could go for, Akashdeep. The way he's done for in domestic and recently अभी Indian team में जो debut हुआ था. Absolutely. He's a good player, a good fast bowler at the top, at the death. Can come in handy with a long handle, can bat a bit also. So I think they'll go for Akashdeep. So maybe not an RTM choice. Could well be an RTM choice also, but I think they can still go after him. Again, it depends on the auction dynamics कि कौन से stage पे कौन आता है. So 6 picks, retentions 4, Kohli, Green, Siraj, Dayal. Absolutely. RTM picks Jackson, Patidar, right? Yeah. I think good core, but यही है, captaincy का एक issue है. Who will be the captain if you let go of Faf du Plessis? Absolutely. He's 40. He's recently won the Caribbean Premier League as a captain. Yeah. British Inter has finally won a tournament.
So Faf du Plessis, I think he's 40 already. 3 more years. I don't think they'll go for him. But Tough call. I have a gut feeling which says that they might go after him in the auction because they can get him at much cheaper price. They've Than probably as a if they batsman. don't get any other captain on board, Yeah, I think Faf is a very safe choice to go. As a better, no doubt. But अगर captaincy का देखो, then they'll probably think long term. Yeah. So let's see how that Let's pans see. out. So let's move on. Second team. Which team do you want to go? Whistle Whistle Podu. Podu. CSK. Let's go. CSK. First pick. Very clear, man. भाई Very डिस्कशन clear. नहीं करना इस पर. आंख बंद. गायकवाड़. Gaikwad has to be the भाई first pick. देखो कैप्टेंसी अगर तुम्हारे इंडियन प्लेयर अगर तुम्हारा कोर है और कैप्टन है इन आईपीएल, आई You थिंक don't let go of him. यू डोंट लेट गो ऑफ हिम, यू बैक हिम ऑल द वे. कोर होना, इंडियन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो देयर इज नो अदर थॉट्स. ठीक है, लॉक गायकवाड़ एट फर्स्ट डिटेंशन 18 सीआर. सेकंड बताओ. Has to be Jadeja, man. इजी है भाई. इंडियन कोर काफी सॉर्टेड है Easy सीएसके है. अगर देखा जाए तो. इजी है ये. एब्सोल्युटली नो डिस्कशन ऑन दिस. जडेजा क्या बात कर Hands रहे down. हैं पे. तीसरा प्लेयर बताओ. तीसरा was a mind bender for me, honestly. I think has to be an overseas fast bowler. ओके, सो एक तुम्हारा टॉप ऑर्डर बैट्समैन कवर हो गया, एक तुम्हारा ऑलराउंडर कवर हो गया, स्पिन ऑलराउंडर, has to be an overseas एंड fast bowling. एक तुम्हारा फास्ट बॉलर. बताओ. Any guesses? मैंने सोच लिया तू बता देगा. भाई सस्ता मलिंगा पथिराना. 11 से 11 ग्रेट डील, मैन. ग्रेट डील. एब्सोल्युटली भाई. इंडियन कंडीशंस में एक्शन रीड करना मुश्किल है. स्क्रैम्बल सीम के साथ बॉलिंग करता है. वेरी गुड पिक एट 11 यार. यप, एब्सोल्युटली हैंड्स डाउन. तुम्हारा एक फास्ट बॉलिंग बेस कवर हो गया. एब्सोल्युटली. तो ये 3 रिटेंशंस तो पक्के हैं एज कैप प्लेयर्स. I think any other cap player does not make sense beyond this for CSK. Yeah, for CSK. And there's a no-brainer again. Mr. Uncapped, Mr. Thala has to be the fourth pick at 4 CR. ठीक भाई. क्या मतलब बोल नहीं सकते और कुछ इसके आगे तो. भाई वैसा भी न्यूज में आया था कि धोनी वाज रिसेंटली मीटिंग सीएसके ओनर्स एट सम वेन्यू. तो आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज फॉर आईपीएल डिस्कशंस फॉर द फ्यूचर और धोनी हैज सेड ठीक है हो गया. व्हाट इफ ये लोग रूल लाए कि चलो अनकैप प्लेयर्स के लिए 5 साल तक नहीं खेलो अनकैप, और धोनी बोले भाई मैं तो खेलूंगा ही नहीं, मेरा हो गया आईपीएल. क्या होगा फिर. कैप्टनसी दे दी है. नहीं आई थिंक खेलेगा इंपैक्ट प्लेयर रूल के लिए की वजह से खेलेगा. धोनी भाई बोला इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं तो वो नहीं खेल रहा होता. चलो ठीक है, चौथा रिटेंशन अपना थला. बट दो बहुत ऑनरेबल मेंशंस हैव टू बी हियर. If not two, at least one, I think. Deepak Chahar, man. चाहर यार भाई पावर प्ले में. I would have liked to retain him, but ये slot में fix नहीं बैठ रहा था. नहीं बैठेगा. I think worth not spending 14 CR or 11 definitely not. He gives a good power play option. मतलब 3 ओवर आंख बंद करके चेहर डालेगा, विकेट भी निकालेगा तुम्हारा. बोल्ड टाइप बॉलर है, विकेट भी निकालेगा तुम्हारा. पावर प्ले में 3 ओवर्स मतलब उसकी डन थी. एमएस धोनी कभी कभी 4 भी डला देता था उससे ऑन द ट्रॉट. But yeah, given the drought of Indian fast bowlers, I think he's going to go big in the auction. Right. He's a cap player. Time for his comeback. And can bat, man. Can bat. भाई श्रीलंका के सामने वो जो 70 ऑड बनाए थे भाई. Good. So RTM. I think RTM. I would have liked to retain him honestly, but I think RTM. Fourth RTM. पांचवा. अभी लास्ट बताओ किसको करोगे. Last, I'm very tentative about this guy, but knowing CSK management and given that this is again an Indian guy, they'll go after him, which is Shivam Dube. Dube जी ये भी जाएगा मुझे लगता है ऑक्शन में for good bucks, but maybe not for double digit. Not double digit. I don't see him as a double digit. And he can be a good RTM for single digit. He's a good player for particular roles. But I think overall there are a lot of technical weakness also. So I don't think. But knowing CSK and knowing that they back they'll back him. तुम्हारे बैट्समैन तो 8-9 तक हैं. तुम दुबे को जहां स्पिन आए तब दुबे को डाल देना बीच में. 4-5 छक्के लग गए, खत्म. एक गेम पिछले सीजन में पलट गई. ठीक है. So I think these are our top 6 picks. You want to summarize? अपने और पिक्स फाइनल कर उससे पहले और there are a couple of more players that they could maybe go for. Conway. Definitely. 2 Kiwis, Conway and Rachin Ravindra. I think again very good options. Conway the stability provided left in the top of the order. I think CSK has that template. वो Michael Hussey के time से पहले Hayden, Fleming, Hayden, Michael Hussey, and I think they have a
liking for lefty overseas batters at the top of the order. So I think But probably, given that they got Rachin Ravindra for peanuts in the last auction, yeah, they would they'll still probably go for Rachin. go for him in the auction and get him. So again. either one of these two, they'll probably I go think. after. Yeah. So just summing up, अपना 4 retentions है Gaikwad, Jadeja, Pathirana, and the 2 probable RTM options for us at this point of time is Chahar and Dubey, solely because Indian core is very valuable in IPL, as we have seen over the years. आप CSK MI की template उठा के देख लो, Indian core is the reason why they've won so much. Absolutely. Right? Let's move on. अपनी DC, Pant's back. Pant is back and is back with a bang. And a clear first retention for DC, no brainer. आंख बंद करके भाई पंत को रिटेन करो, आगे बढ़ो. Second pick at DC has to be Akshar. Undoubtedly Akshar. Undoubtedly. At this point of time, in my mind, Jadeja and Akshar in T20s are almost equivalent, if not more. Probably, if you ask me, I would pick Akshar ahead of Jaddu. True, true. But given the experience that Jaddu has, we can't. I mean, experience has that separate pace. No comparison, but Akshar is right up there. What a World Cup campaign this guy has had, man. And what a floater. You can send him up at 3. You can float him down to 7, 8 when the team needs him. And gives you a great bowling option. Absolutely. Power play में with the angle comes in. एक ही जगह डप्पे खिला के वो बैट्समैन को थका देता है. इमाद वसीम के सामने जो ओवर डाली थी, छोटी, outside off. Total package, total T20 package. Proper. So second retention, Akshar, without a doubt. Yep. Cool. Who's the third one for you? Third one for me because, like I said, I'm a big fan of Indian core. And this bowler has come a long way in the past few years. Had a proper slump where even he wasn't picked for his IPL sides. KD. Even after being a part of the Indian setup, wasn't picked for IPL sides. उतना slump आ गया था. But since his increased his pace, उसने एक इंटरव्यू से बोला है कि अब रोहित भाई ने बोला कि पेस पे काम करना है और पेस बढ़ा कि फिर जो आया है, जो कमबैक हुआ है, people not able to read him. Left arm China man in Indian conditions, I think. In my opinion, this is a no-brainer, man. No-brainer. मतलब Kuldeep, you can't let go of Kuldeep, man. Done. तो अपने pick हो गए. Pant, Akshar and Kuldeep. 3 retentions. 3 capped picks. Any uncapped picks? No uncapped picks for me as of now. I don't see anyone in Delhi जिसका. मुकेश हो सकता था, but वो cap हो गए हैं, sir. मुकेश cap हो गया. और कोई तो I don't think uncapped option है दिल्ली के पास. Is there? नहीं uncapped का option उनके पास कोई भी. ललित यादव उनका एक था, but I don't think probably not a retention case. RTM में है. RTMs के लिए they could multiple ways they could go after, but I'm not sure कितना clear cut case है. So if you ask me for my first pick at RTM, has to be Maguk. Why JFM? Definitely. Why JFM is. But I have head in the making. Travis head in the making is JFM. He's a different beast, man. I mean, आते ही उसको बॉल वॉलीबॉल के जैसा दिखता है और वो just goes for it. But I have a feeling that थोड़ा महंगा पड़ सकता है getting JFM back because there are multiple teams and there are certain teams like Punjab who don't like spending a lot on players who they want. So I think Maguk एक बहुत ही crucial pick हो सकता है if they get him back at a good price. बढ़िया pick है. Overseas opener आपको एक मिल गया. But difficult है. I think JFM का वापस आना दिल्ली में थोड़ा difficult है if I don't retain them. But definitely they should go after him. That's for sure. Cool. So that's our RTM option 1. RTM option 2, I think Stubbs. In fact, Stubbs has to be option 1 for me, honestly. RTM option case. RTM Stubbs. By middle order stability has come a long way in T20s recently. Great buy Stubbs. और थोड़ा सीजन भी हो चुका है Stubbs अब. वर्ल्ड कप भी खेल के आ चुका है. तो मेरे ख्याल से JFM के ऊपर Stubbs को मैं RTM करना प्रेफर करूंगा and then my second RTM option would be JFM. Stubbs इनिंग संभाल भी सकता है. Absolutely. अटैक भी कर सकता है, फिनिश भी कर सकता है. Technically strong भी player. Long levers, technically very strong. Yeah. Play spin well. तो ठीक है, लॉक हो गया. और लास्ट RTM किसके लिए यूज करोगे? You have the sixth option. ये मैंने अभी just mention किया था. I would go for मुकेश. क्योंकि मुकेश मैं रिटेन करना चाहता था but 18, 14, 11 slot में मेरे लिए नहीं फिट बैठ रहा था वो. But again, given a good Indian pacer going in the mega auction, he might go for big bucks, and maybe that's when you get him back. Correct. If possible. So you could either go for Mukesh or there's another option in Nokia. Nokia, proper pace, South African. Yeah. So no, but given Indian players core, have their Indian मतलब
उसके अलावा फिर ऑप्शन. करेक्ट. सो लॉक हो गए अपने 3 रिटेंशंस आर पंत, अक्षर, कुलदीप, एंड योर आरटीएम्स आर मगक, स्टब्स एंड मुकेश कुमार. दैट्स इट. डन. नेक्स्ट टीम गुजरात. आवादे. आवादे आवादे. गुजरात का भी पहला पहला रिटेंशन तो नो भाई ब्रेनर है. आंख बंद करो, गिल को करो, डिस्कशन भी नहीं करते, आगे कोई बढ़ते हैं. डिस्कशन नहीं है. सेकंड भी आंख बंद करो, आगे बढ़ो. ठीक है भाई. राशिद खान. खान, राशिद खान भाई, राशिद खान. थर्ड आई थिंक दिस इज अगेन अ नो ब्रेनर. नो मोहम्मद ब्रेनर, शामी. मोहम्मद शामी. भाई आदमी थोड़ा वो बट आई होप कि शुभंकर मिश्रा के शो पे आके थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया है भाई का. खुल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा अभी शमी खुल रहा है. अब तक खुला नहीं था. अब तक लग रहा था बिरयानी खाता है, सोता है, तेज बॉलिंग डालता है. अब लग रहा है कि नहीं शमी है. शमी था तो हमेशा से ही, मतलब ऑन द ग्राउंड तो हमेशा से ही था. बट ऑफ द ग्राउंड उसका काफी बढ़ गया है. अभी वीडियोस डाल रहा है, रिसेंटली सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया है. कह रहा शमी तो बुमराह तो आएंगे. है शमी. थर्ड डिटेंशन शमी. चलो डेफिनेटली हो गया. 11 CR में शमी इज अ स्टील मैन. आई मीन इफ ही Steal. गोस टू द ऑक्शन ही इज गोइंग टू Absolute steal, सो यू absolute हैव steal. टू रिटेन हिम. डन. और और आई थिंक ये 3 कैप भी हैं. आई डोंट थिंक इसके अलावा कोई और कैप मेक सेंस करता है इनके लिए. मिलर नो, आई वोंट पे हिम 18. मिलर आरटीएम के लिए रखते हैं. श्योर. और कोई भाई इसमें अपने अनकैप प्लेयर्स हैं जो, एक बताता हूँ अपना, जो ये नए अनकैप रूल की वजह से इन द डायनामिक्स इज बैक. मोहित शर्मा आई थिंक हैड अ वेरी गुड सीजन विद जीटी फर्स्ट ईयर, गॉट पर्पल कैप. Yeah. आई थिंक ही वाज अप टॉप देयर इवन इन द लास्ट टू सेकंड सीजन. अभी जो जडेजा ने उसको 23 सीजन में जो लास्ट 2 बॉल्स पे 10 चाहिए थे, बट अगेन टिल देन ही हैज हैड अ वेरी गुड आईपीएल सीजन. ठीक है, अभी वो 2 बॉल एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, डिफरेंट स्टोरी. बट गाय कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस. And apart from skills, he's got brains. He He's got knows brains. when to ball Yes. which ball. He knows when to ball the slower one. He's Absolutely. got a good knuckle ball also. Yeah. Knuckle ball and back of the hand. Back of the hand too. Yes. Seam upright. Yeah, पता ही नहीं चलता. Yeah. So that's there. Has to be यार. Mohit 4 Sharma has करोड़ to be में rated. मोहित 4 शर्मा crore is a में- steal. Because I keep on saying this, an Indian fast bowler going into the auction has to Rare be commodity. Yeah. Yeah. एक और लगता है मेरे को. बता. तेवटिया. टेवटिया काफी डिलीवर किया है भाई. टेवटिया ने बहुत मैचेस फिनिश करे जीटी के लिए. और मतलब ऐसे जीत से दूर जाते जाते जीत को पास ले आता था. Lefty option again. I don't think many people still remember this. Tewatia is started his career as a leg spinner. He still considers himself a proper leg spinner. Domestic में he bowls properly. Leg spin अच्छी है उसकी. खाली IPL में अभी उसकी बैटिंग निकल के आई है तो they've been preferring him. But bowling भी करता है तेवतिया. So I think at 4 CR तेवतिया is a steal. Absolutely. Steal. Absolutely. तो 5 हो गए. छठा अपना एक बचा है, RTM यूज कर सकते हैं. I think I'm really confused between 2 players. एक इंडियन है, एक फॉरेनर है. But I would go for a seasoned player in David Miller. Miller, yeah, absolutely यार. और मुझे ऑनेस्टली लगता नहीं कि ये बहुत ज्यादा प्राइस इसका होने वाला है ऑक्शन में, क्योंकि मिलर जैसे प्लेयर्स हैं टीम्स टू गो आफ्टर करने के लिए. बट आई थिंक दे कैन यूज देयर राइट टू मैच फॉर डेविड मिलर. They can get him back in a good price. Miller is worth it. और उनका कोर था शुरू, पहले सीजन से खेल रहा है. You can't let go of this player. So I Miller think is clear core. cut RTM case is David Miller. Miller is a core. Done. And talking about, in fact, I won't be surprised even if they retain Miller at 3 and they get Shami That's as possible. RTM. That's possible, but I again repeating, Indian player आप नहीं जाने दे सकते हो, Indian bowler को आप ऑक्शन में नहीं जाने दे सकते हो, क्योंकि RTM you never know क्या होने वाला है. And with the twist in the RTM, you just never know. Correct. You can take risk with the foreign players. Correct. And get them back, but I think that's why yeah, makes sense. और एक है, they could go after Sai Sudarshan. Came a long way. IPL में क्या, final में क्या innings खेली थी. Absolutely. Unfortunately, didn't go his way, but has made his India debut. Is a cap player now. Yeah. Has done well. So I think Sai Sudarshan at the top of the order could be a good pick. But again, they're out of Risky their move RTMs. they're out of their RTMs. So लेकिन I'm a fan of, I'm a believer कि तुम्हारा जितना भी core हो, तुम जितना retain कर सको through any way, just get all those players back जिसमें तुम्हें belief है. क्योंकि वो it goes a long way. Yep. Right. Moving on. So we'll just summarize GT के top retention. So clear cut retention at 1 we have Shubman Gill, at 2 we have Rashid Khan, at 3 we have Shami, at 4 and 5 we have Tewatia and Mohit Sharma, and you can use your right to match for Kela Miller. Lock. That's it. Like the video, hit like, share and subscribe.
And don't forget to hit the bell icon.